we have actually seen a significant shift towards people wanting to use digital financial services. And that we just need to build on that momentum and continue to keep hammering the idea that our common enemy is cash. इकोनॉमी की भी एनिमी कैश है, टैक्सेशन की भी इकोनॉमी कैश है, हमारी वेल बीइंग की इकोनॉमी कैश है। और हमें जितना जल्दी हम इस कैश को डिजिटाइज करेंगे उतना जल्दी ही हम इस मुल्क को की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको फॉर्मलाइज कर सकेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम वंस अगेन। मुझे आपसे जानना था कि जो हम पहले तो माशाल्लाह से, क्योंकि आपका एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एंड पोर्टफोलियो है इन डिजिटल पेमेंट्स के हवाले से पाकिस्तान के इकोसिस्टम में। और अब या जो एक कॉन्सेप्ट है डिजिटल बैंकिंग का, आप इसका पोटेंशियल किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि टू सम एक्सटेंट लोग कहते हैं कि जी अभी हम बेसिक सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट्स आते हैं। तो उस हवाले से एक पूरा डिजिटल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट, क्या ये प्रीमेच्योर नहीं है सोसाइटी के लिए, या डू यू थिंक वी आर वेरी मच रेडी और ये चीज प्रोग्रेस करेगी? देखिए, दो तीन चीजें, राइट। एक तो ये कि डिजिटल इज नो लॉन्गर फॉर द प्रिविलेज्ड, इट्स फॉर एवरीवन। या तो ये कहना कि जी हम बेसिक्स नहीं प्रोवाइड कर रहे तो हम डिजिटल क्यों प्रोवाइड करेंगे या कैसे प्रोवाइड करेंगे, that to me seems like a flawed argument. What ओके। I would say is कि अगर आप देखें कि in the last 10 years or so, what Easy Paisa, Jazz Cash, and other branches banking entities have done, उन्होंने the concept of ubiquitous digital financial services mainstream कर दिया है, to the point that um, you know, between the 110 million odd unique SIM subscribers in this country, there are nearly 70, 80 million uh, wallets जो कि उन सिम से रिलेटेड हैं, जी। राइट। और आपके पास बैंक अकाउंट्स हैं, वो कहने को तो 21-22% हैं, लेकिन वो बैंक अकाउंट भी जो है वो देयर देयर स्टिल a significant number relative to Pakistan's population. Yes, it's a low number, but Pakistan's population is huge. तो ये कहना कि बैंकिंग की दुनिया में शायद कुछ हुआ नहीं है, वो गलत होगा। मेरे ख्याल में banks have, at least in the last 10 years that I've been in Pakistan, I found that um, a lot of financial services institutions are trying. There are some progressive ones, some that already have scale, and they're trying to convert that scale to their digital platforms. HPL is an example. UPL is another example. जहाँ पे each of them have close to, मेरे ख्याल में HPL के अब 3-3.5 million digital subscribers हैं, UBL के भी close to 2 million digital subscribers, and these are your two largest banks. हम्म। फिर जो आपके एफ्लुएंट कस्टमर्स हैं जो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड वगैरह के साथ हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड although has a very small customer base in the market, but most of them are digital savvy customers and a lot of their customers are already online. So there is significant movement that has been made, और यहाँ पे आपको इस चीज का क्रेडिट आपके रेगुलेटर को भी देना होगा। आपके रेगुलेटर सेंट्रल बैंक जो है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो they've been at it for a while. For the last 10 years that I've been here, 11 years that I've been here, I found that they're extremely receptive to new ideas. Of course, they're cautious and they're sort of constantly looking to make sure that they're protecting the consumer. Like, in once you have your ideas around digital financial services figured out, the state bank, I find, is very facilitative in helping roll those ideas forward. हमारे कुछ नुआंसेस हैं पाकिस्तान के जो हमें समझने चाहिए। उनमें से एक बहुत बड़ी चीज ये है कि हमारा कस्टमर, चाहे
टेक savvy हो, हमारा कस्टमर इस वक्त फ्रॉड savvy नहीं है। उसको फ्रॉड की समझ अ, शायद नहीं आती, और सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू थोड़े से नेफेरियस एक्टर्स जो कि लोगों को कॉल करके मुख्तलिफ तरीके से उनकी पिन ले लेते हैं, उनकी अकाउंट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उससे अभी बचने के लिए हमने हमें अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। और उसकी वजह से डिजिटल के ऊपर एक धब्बा लगता है कि जी लोगों के पैसे निकल जाते हैं, या लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। आई कैन अश्योर यू कि अगर वो डिजिटल ना भी होता, तो फिर भी उन कस्टमर्स के साथ फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा थे थ्रू कन्वेंशनल मीन्स एज वेल, बिकॉज वी uh, we actually don't create that idea of financial security, and we don't create that idea, not financial security, that's something else, but the idea of a security mindset हम create नहीं करते शुरू से हम्म, अपने दिल में, और वो फिर जब कुछ इसके साथ हो जाता है तो कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी थी, हो गया। बट जी। आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बहुत कोशिश भी कर रहे हैं करने की, तो वो एक डिजिटल के लिए इम्पेडिमेंट जरूर रहा है पिछले चंद सालों में। लेकिन टू कंक्लूड माय आंसर, आई वुड से कि between what the central bank wants to do, and despite the inertia that banks have, the efforts that they have made, and with large credit to branchless banking entities, telco-owned entities like Jazz Cash, Easy Pesa, etc., we have actually seen a significant shift towards people wanting to use digital financial services. And that we just need to build on that momentum and continue to keep hammering the idea that our common enemy is cash. इकोनॉमी की भी एनिमी कैश है, टैक्सेशन की भी इकोनॉमी कैश है, हमारी वेल बींग की इकोनॉमी कैश है। और हमें जितना जल्दी हम इस कैश को डिजिटाइज करेंगे, उतना जल्दी ही हम इस मुल्क को की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको फॉर्मलाइज कर सकेंगे, और दिखा सकेंगे कि पाकिस्तान का ट्रू पोटेंशियल क्या है। एंड इन दैट रिस्पेक्ट आई फील कि डिजिटल डिजिटल को हम we will truly start to appreciate digital when we see the impact of digital financial services in making our economy, uh, you know, making sure that our economy's potential is truly realized. Thank I totally agree with your point of view, Kiji. You must credit the the financial institution, the authority, the central bank, that they've been doing the progression and then being advancement to the financial service economy. But सर जो पास से एक एक्सरसाइज है जो हम देखते आ रहे हैं, यू नेम्ड the financial digital services like Gas Cash, Easy Pesa or other banks जो कि digital services provide कर रहे हैं. But don't you think still we are in the transition between conventional banking, or let me rephrase it, still as a community, as a consumer, we are confused or struggling between conventional banking, जो कि branch banking कह लें, and the digital banking. I've seen and witnesses that ठीक है flaws होते हैं, but इस तरह की सर्विसेज के डेफिसिट हैं जो कि लोगों को मेरे ख्याल से ऑनलाइन या डिजिटल बैंकिंग पे जो ट्रस्ट डेफिसिट की आपने बात की उस पे और ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथन करते हैं कि आई डोंट नो यूज करना भी चाहिए, डिजिटल नहीं करना चाहिए, शुड आई डू, और इससे कहीं मेरी कोई जो मेरे डिपॉजिट्स हैं या मेरी जो ट्रांजेक्शन है वो कितनी सेव हैं या कितनी वनरेबल हैं। इस चीज का जो सारा एजुकेशन है, मैं समझता हूँ कंज्यूमर एजुकेशन वो कहीं मिसिंग है, या वो इतनी वेल चाक आउट नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। Okay, so look, the good part is that a large portion of our economy, a large portion of population is under the age of 37, right? या Uh, and they're all tech savvy. They understand that when you are working with digital, doesn't mean that you're you are entering into another dimension. Digital is just
or technology is just an enabler for you to do things differently, right? Or एग्री। yes, in some circles you'll have this the doubt कि जी हमने अपने अगर अकाउंट में पैसे रखे हैं और अगर हमने मोबाइल ऐप से उनको एक्सेस कर रहे हैं तो शायद वो हमारे पैसे कहीं चले जाएं। लेकिन look, the point is that the moment you hand over your money to a bank, that money is no longer with you. It is held या in your name in a vault somewhere, right? या And जब हम उस पैसे को uh, अपनी डिजिटल ऐप पे दिखाते हैं तो वो इसका ये मतलब नहीं कि वो पैसा जो है वो किसी के वॉलेट से उठ के आपके फोन में आ गया है. It's just a representation, unless you're talking about digital currency altogether, that which is a separate subject. We probably या talk about that later. But um, you know, using a digital channel is just a representation of the money that you have deposited. Uh, and it's no different from you going to a bank branch saying, "कि मुझे बताओ मेरा balance." Um, they will probably access the same system with a slightly more cumbersome interface to get you the same information that you could access on your phone. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जब मैं एचपीएल के साथ था तो हमने we did some research and we found out that uh, there were on a daily basis 100 to 128 customers coming to counters for branches. और उनमें से 18% सिर्फ ऐसे थे जो सिर्फ अपना बैंक बैलेंस पूछने आते थे, राइट? या अगर उन 18% को ही आप कन्वर्ट कर लें और उन्हें सिखाएं कि जी आप अपने ऐप में अपना बैंक बैलेंस मालूम कर सकते हैं और आपको ब्रांच आने की जरूरत नहीं है, आपको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, आपको अपना वक्त ब्रांच के काउंटर का वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है, तो दैट वुड सेव देम अ लॉट ऑफ एफर्ट and that would save the bank a lot of money because for a bank the size of HPL, it to service one customer on the counter, it costs about 192 rupees, नो right? ऐसा आप हाँ, मैन पावर ले लें, इलेक्ट्रिसिटी जी ले लें, रेंट ले इलेक्ट्रिसिटी ले लें, लें। सब ले लें, इट कॉस्ट हाँ, अबाउट 192 रुपीज, 200 रुपीज का अगर आप लगा रहे हैं. जबकि ऐप के ऊपर एक कस्टमर को सर्विस करने के लिए ये कॉस्ट शायद पैसों में हो, राइट? ठीक है, बिल्कुल So सही। imagine if you were able to convert that branch traffic at banks to digital, you would be able to sort of reduce the costs and you can pass on those benefits to your customers, right? या Banking would become more affordable for people. Banking would become, less cumbersome for people. और ऐसे नहीं है कि बैंक ब्रांच में वो बिजनेस खाते पे नहीं हो रहा, right? The back end of a bank is digitized. There is a core बिल्कुल। banking application. That core banking application has a ledger of accounts, and that ledger of accounts is visible to your teller or a branch ops person at the counter through a system. जब आप जाके ब्रांच पे चेक जमा कराते हैं या जब ब्रांच पे बिल जमा कराते हैं वो उसी सिस्टम से वही काम करता है जो आप अपने फोन से कर सकते हैं. So वेरी ट्रू। it's not a different dimension. It's actually is the same इट्स जस्ट अ system. माइंड It's just that इट्स जस्ट अ you're माइंडसेट। adding one, yeah, you're adding one more step, and that step is a person. जहां पे बैंक का काम आता है, बैंक का काम है कि आप अपना यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा करें अपनी ऐप के ऊपर कि उसके मुकाबले में ब्रांच पे जाना कस्टमर को ऐसा लगे कि बहुत कम्बरसम है. एंड दैट इज वेयर वी आर फेलिंग देयर. हम अपना वेरी यूजर ट्रू। एक्सपीरियंस एक तो समझते नहीं है कि हमने वो यूजर की जर्नी क्या है, और दूसरी बात यह है कि हम ये नहीं समझते कि यूजर का एक्सपीरियंस हम बेहतर कैसे करना चाहते हैं. हम ठीक है। वही चीजें जो हम ब्रांच में गलतियां करते हैं वही हम वी ट्राई टू रेप्लिकेट दैट ऑन इन आवर डिजिटल स्फीयर एज वेल. जी आप सही कह रहे हैं। इवन इन मिडिल ईस्ट आई सीन कि जी अगर आप ब्रांचलेस बैंकिंग करते हैं या मोबाइल बैंकिंग करते हैं तो बैंक अप्रिशिएट योर एफर्ट्स और उसमें आपको उसके पॉइंट्स हैं, उसको अट्रैक्शन हैं डिफरेंट, एंड दे प्रेफर कि जी आप जो है डिजिटल बैंकिंग पे ही रहें और ब्रांच में इतना ज़्यादा मूविंग ना करें। और वो क्योंकि एक अलग
बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है, आपकी बात है टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें एक बहुत अलग उनके अपने डायनामिक्स हैं। बट इन पाकिस्तान आप इजी पैसा के साथ हैं। मुझे याद है मैं 2000 अगर 9 की बात करूं, आई वाज वर्किंग विद इजी पैसा दैट डे, नदीम साहब के साथ की जो मार्केटिंग टीम थी। और उस पे लॉन्च हुआ कि जी हम ऐसी एक सर्विस लेके आ रहे हैं, जब उस वक्त टेलीन और तामीर बैंक हुआ करता। तो जी हम जो आप जो है वो मोबाइल के थ्रू आपके पेमेंट्स और बिल और सारे कुछ पे होंगे। देन इट वाज अ वेरी फ्रेश न्यू कॉन्सेप्ट। बट जो टारगेट मार्केट वहां सेट की गई, आई रिमेम्बर इफ आई मे रिकॉल करेक्टली, वो अनबैंक और वेरी लो लेवल, जो लो इनकम लेवल जो है वो कैटेगरी थी। और उसमें मेरा जो एक मेरे टू सेंट्स है वो ये कि जी एजुकेशन जो है इस पूरे सर्विस की, एजुकेटिंग दैट कस्टमर कैटेगरी वुड बी चैलेंजिंग। तो क्या उसके लिए हम प्रिपेयर हैं? जाए आप डायरेक्टली जाएं और उनको एक्सपीरियंस दें कि जी ये दिस इज हाउ द सर्विस विल वर्क, रादर आप पहले उनको कॉन्फिडेंस तो दें कि जी सर्विस है, और उनकी जो माइंडसेट है या उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उस पे आके आप उनको एजुकेट तो करें। तो वो वहां पर एक बड़ी अच्छी जो है वो कैंपेन शुरू की गई और वो सारी चीजें हो गई, एंड इट इज द लॉन्ग जर्नी। सेम विद जैज कैश। बट मेरा ये सवाल आपसे है कि एज अ, मैं मेरा मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग स्टूडेंट अगर मैं कहूँ अपने आप को, ब्रांडिंग जो है वो बड़ी क्रूशल होती है। और वो या एक कंज्यूमर इमेज जो उसका माइंडसेट है उसमें लॉयल्टी भी आ जाती है, उसमें रिपीट परचेजेस भी आ जाती हैं और उसके साथ आप रहते हैं। कहीं आप समझते हैं कि हमने अपनी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी मोबाइल वॉलेट्स के अंदर जो शुरू हुई उसको हमने सही तौर पे यूटिलाइज नहीं किया? वो जो जर्नी था वो बहुत कम हो सकता था प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, मगर हम स्टिल अभी तक प्रोग्रेस कर रहे हैं उसमें। एंड नीडलेस टू से आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि डिजिटल बैंकिंग पे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मोबाइल वॉलेट्स हैं, जो पेमेंट है प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। और इतनी बड़ी अगर आप कहें मोर देन डेकेड की जो है स्प्रेड पे, अगर ब्रांड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर आर स्टिल स्ट्रगलिंग, तो कहीं कंज्यूमर एजुकेशन या ब्रांडिंग का फ्लॉ है? um, देखिए, as of um, you know end of 2022 and beginning of 2023, I don't think either of the two large services are struggling. They're now, again, if my information serves me correctly, they're both now profitable. So they've had a long journey to They become profitability. profitable, but a long journey, हाँ, after a long journey. लेकिन वो the reason they have become profitable also is because of understanding कि उनको P2P ट्रांसफर्स और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के अलावा और यूज केसेस भी लेके आने थे। तो जब हम्म, उन्होंने लेंडिंग के यूज केसेस इंट्रोड्यूस किए या सेविंग्स के यूज केसेस इंट्रोड्यूस किए, डिपॉजिट टेकिंग के यूज केसेस इंट्रोड्यूस किए, तो वो उनकी पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा सोलिडिफाई हो हम्म, गया। एंड ये हमें थोड़ा सा इस सिलसिले में उनको क्रेडिट भी देना चाहिए कि उन्होंने मार्केट क्रिएट की है। बिल्कुल और सही। Agree. अ, हम इस एक ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे हमारी रिलायंस ऑन कैश है। तो उस जंग में लड़ते लड़ते उनको अगर 10 साल के बाद वायबल रिजल्ट्स आना शुरू हुए, तो आई थिंक दैट्स वेरी इनकरेजिंग। और जितने भी ट्रेल ब्लेजर्स रहे हैं, अगर आप अ, नदीम से लेके मुदस्सिर तक इजी पैसा में देखते हैं, जी या जी। आप जैज कैश के अंदर फ्रॉम द बिगिनिंग देखते हैं टू हम्म, व्हाट नाउ मुर्तजा इज डूइंग, तो you would हम्म, find that these leaders have had to make some very tough decisions to continue to keep investing money into new use yes, cases and into creating education and in creating the kind of awareness that was needed for people to start to trust digital financial services. और उनकी उन्हीं के शोल्डर्स पे अब खड़े होके ईएमआईज हैं, और आगे अब इंशाल्लाह डिजिटल बैंक्स आएंगे, तो वो उन्हीं जी, के शोल्डर्स पे खड़े होके आगे जाएंगे। और उसकी वजह हम्म, ये है कि दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। वी कैन नॉट डिस्काउंट दैट, credit should be given where it's due.
हाँ, इट्स टेलकोज हंड्रेड ने परसेंट। अपनी अपनी मार्केटिंग के बजट्स काट के अपने फाइनेंशियल सर्विसेज में डाले ताकि जी। वो उसको ना सिर्फ उसकी ब्रांड को बनाए बट बल्कि वो अवेयरनेस भी क्रिएट करें। दूसरी चीज जो हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि शायद द अप्रोच वाज नॉट द राइट वन। हमने अ, बहुत अरसे तक ओटीसी के ऊपर रिलायंस की। हमने जी। कहा कि चूंकि वो ओटीसी हमारा कैश काउ ओके। था टेलको साइड पे, जी। कि हम ओटीसी के अंदर कमीशन देते जाएं, कमीशन देते जाएं, कमीशन देते जाएं। uh, और वो कमीशन वॉर्स में पड़ गए हम। हम्म। Whereas we could have actually used that money that we were paying towards commissions to actually create customer awareness and move people over to smartphones quicker. जी। Or even if they were using USSD, move them over towards self-service faster than getting them to continue to go to the counter for काउंटर। P2P transactions. जी। सो जहाँ पे बहुत सी अच्छी चीजें की हैं टेलको ओन्ड ब्रांचलेस बैंकिंग सर्विसेज ने, उन्होंने कमीशन वॉर में पड़ के एक बहुत बड़ी गलती की है, बिकॉज दे दैट दैट हेल्ड बैक द प्रोग्रेस हम्म। for a very long time till they realized कि यार this is not a war that they needed to fight. They needed to put their focus on building smartphone apps. They needed to put their focus on moving people towards self-service. और अब वो डैमेज जो एजेंट के मुंह को कमिश्नर का खून लगा हुआ था, हम्म। उसने जो डैमेज किया था वो डैमेज अब जाके उसके असरात कम होना शुरू हुए हैं, बिकॉज देयर इज कंसर्टेड एफर्ट टू टू नॉट रिवॉर्ड बैड बिहेवियर बाय पेइंग कमीशंस। सही। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्रेडिट तो देना चाहिए और जरूर है, क्योंकि वही ब्रांड्स जो थी वो लीडरशिप स्लॉट उन्होंने और फर्स्ट मूविंग स्लॉट जो है वो पोजीशन ली, और लोगों ने देखा, विटनेस किया, बहुत सारी लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को इम्प्रूव किया गया, और कंज्यूमर साइड पे भी और ब्रांड साइड पे भी। अब नाउ कमिंग बैक टू द डिजिटल बैंकिंग, आप जो सर्विसेज समझते हैं डिजिटल बैंकिंग की, would you be coming up with a all slot of, यानी कि डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज जो कि कवरेज करता है एज अ डिजिटल बैंकिंग की टर्म को, या आप वन बाय वन अपनी जो है सर्विसेज को लेके एज अ प्रोग्रेसिव मैनर पे इसको लॉन्च करेंगे, एंड टारगेट कंज्यूमर जो है वो अगेन, जब भी प्रीवियसली जितनी भी सर्विसेज आई हैं उन्होंने एक रिटेल क्लास, या आपने जिस तरह से कमीशनिंग क्लास को पहले टारगेट किया है। हम मुझे ब्रांडिंग प्रोस्पेक्ट में आपसे पूछ रहा था, वो इसी वजह से था कि मैं समझता हूँ कि जी अगर एक बहुत अच्छी व्हीकल है टोयोटा, तो उसके साथ अगर आप ऑडी या बेंज खड़ी करते हैं तो उसके हैं तो सारी व्हीकल, मगर जो प्रेफरेंस है, ये जो इंस्पिरेशनल वैल्यू है कंज्यूमर के जहन में, वो डिवाइड हो जाती है। तो और वो फिर बड़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यू वो क्रिएट करता है। इट्स जस्ट लाइक कि जी गाड़ी तो सब है, ठीक है ना, सारी मूविंग व्हीकल्स हैं, मगर उसके अंदर एक इंस्पिरेशनल वैल्यू है, एक ब्रांड का इम्पैक्ट है। मैंने जो Yeah. डिजिटल बैंकिंग अभी थोड़ी बहुत देखी है, आई एम जस्ट वेरी बैड स्टूडेंट फिनटेक का, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें मैंने ये देखा कि जी ठीक है, वर्ल्ड वाइड एक बहुत कॉन्सेप्ट इवॉल्व होके, एक्सपीरियंस होके, अब शायद वो कहीं अपने आप को रीवॉल्व की पोजीशन पे लेके जा रहा है, मगर पाकिस्तान में क्योंकि अभी नया कॉन्सेप्ट है, आप डिजिटल बैंक लेके आते हैं, योर यू विल ऑफर सर्विसेज, तो वो जो सर्विसेज हैं वो टारगेट मार्केट है, जो एजुकेशन है, लर्निंग है, ब्रांडिंग है, उस 360 डिग्री को या 360 जर्नी को आप किस तरह से देखेंगे या देख रहे हैं, या देखना चाहिए, जनरल एक सवाल का। देखिए, डिजिटल इज नॉट सिल्वर बुलेट और मैजिक वॉन्ड, राइट? हम्म। और डिजिटल बैंकिंग भी जो है वो it's not like we're trying to reinvent the wheel. हम्म। Banking, in its very at its very core, is one entity's ability to give access to individuals and businesses to either forms of credit or forms of saving, right? ओके। ओके। So, for a digital bank, I don't think कि आपका
जो यूनिवर्स ऑफ प्रोडक्ट्स है वो वेरी डिफरेंट होगा. Within that universe of products, आपकी approach to understand your customer and your approach to deliver value to those customers' needs is going Mm-hmm. to be very different. We are, uh, by being digital, we are by very nature going to be customer centric. We Okay. are going to make more of an effort to understand our customers through data, through the device interaction that they have, through uh, the digital footprint that they continue to create. And uski wajah se, because we would have the ability to understand the customer a little better, we would also have the ability to serve the customer a little better. Um, आप अगर banks को देखें तो banks, the reason banks are being disintermediated by fintechs is because banks were unable to create relevance. They were unable to हम्म, create context. जी बिल्कुल. फिनटेक्स ने अपने कस्टमर्स को एक बहुत बेहतर तरीके से समझा. उन्होंने कस्टमर जी के पेन पॉइंट्स समझे, उन्होंने वो यूज केसेस समझे जो उनको डेवलप करने चाहिए थे टू सर्व द कस्टमर्स बेटर, और उसको फिर उन्होंने मैरी किया विद विद द फाइनेंशियल सर्विसेज वैल्यू प्रोपोजिशन दैट दे वर क्रिएटिंग. जब हम बात डिजिटल बैंक्स की करते हैं, और अगर दुनिया में देखें तो आपको तकरीबन 100 एक एग्जांपल्स ऐसी मिलती हैं जहां पर डिजिटल बैंक्स have had um, have had relative success, जी right? Or abhi bhi, it's still evolving. But जी Nubank is one example that comes to mind बिल्कुल out of Latin बिल्कुल. America. उन्होंने हम्म, जहां से proposition शुरू की अपनी, वो थी क्रेडिट कार्ड्स. उन्होंने जी क्रेडिट की एक्सेस देना शुरू की लोगों को थ्रू डिफरेंट मीन्स. जहां पे जिस मुल्क में 2 2 हफ्ते, 3 3 हफ्ते, समटाइम्स 6 हफ्ते, 10 हफ्ते लगते थे क्रेडिट कार्ड देने में, उन्होंने वो काम मिनटों में करना शुरू किया. पाकिस्तान में जी आज आप देख लीजिए कि अगर आप किसी बैंक से, वो तो क्रेडिट कार्ड्स हैं टोटल 1.6 मिलियन. जी अगर आप किसी बैंक से आज क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं, एज एन एसएमई, एज अ रिटेलर, एज अ बिजनेस ओनर, आपके लिए क्रेडिट कार्ड लेना नामुमकिन है, जी. राइट? बिकॉज उनके पास डेटा नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है. As a digital bank, we have the ability to understand that information and data slightly differently, use proxies to understand हम्म, the SME's business, and we should be able to then give them access to credit either through a credit card or a red line or a working capital loan instantly. So हम्म, when we do that, we will be able to create more relevance, right? ओके. Both on the business side, SME side, and on the individual side. जी बिल्कुल. Similarly, access to savings. हम्म, अगर आज आप एक टी बिल लेने जाते हैं, अगर हम सबसे सबसे आसान और सबसे एक्सेसिबल सेविंग प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे TDR और टी बिल, तो हम्म, उसके अंदर आपको कम से कम 5,000 रुपए चाहिए, right? ठीक है What ठीक if you है. don't have 5,000 rupees and you only have 100 rupees? A digital हम्म, bank has the ability to fractionalize a small investment for you even ओके further, so that you can invest the money that you have rather than aspiring to save up to a certain point and then invest that money, right? ओके. दैट हमने चाइना में दैट्स देखा कि वो इंटरेस्टिंग. उन्होंने एंड फाइनेंशियल ने इंट्रोड्यूस कराया था कि आप even with 100 yuan in your Alipay account, you would be able to invest in treasury bills. So they would ओके aggregate small deposits and they would then invest it in treasury, and they would share that spread with their customers, right? ओके. Banks have the ability to do it. Banks are just too focused on large ticket deposits and large ticket savings and large ticket products and services to not make digital financial services ubiquitous and accessible for all. And that's हम्म, where digital banks can make a difference. ओके. तो सर, हैविंग सेड दैट, आप एज अ एंटिटी लोकल मार्केट को ठीक है, एक्सपीरियंस, लर्निंग्स सब अपनी जगह, बट आई डोंट थिंक वी डू हैव दैट मच रिसर्च और डेटा अवेलेबल एज ऑफ नाउ वी स्पीक. और वुड दैट बी a new market entry strategy that you would adopt, or you will say no, we are already in the market, we have got a good experience and learnings with us, and let's go for the
बुलजाए? देखिए, we are in a unique position, right? Inshallah, when Okay. Hugo Bank is fully active, एक तो हम, right now we are in the process of getting incorporated, but when we are ready to go to market, Mm-hmm. through the blessings of the central bank, हम हमारे पास जो यूनिक एडवांटेज है वो है हमारी पार्टनरशिप with one of our principals, and that is Muller and Phipps Pakistan. Muller and Phipps has been serving small retail merchants जी. for uh, for a significant number of years, a few decades in the country. और उनके पास पिछले चंद सालों में तो बहुत रोबस्ट डेटा है, और वो डेटा जी. जो है वो हमें इट हेल्प्स अंडरस्टैंड मर्चेंट बिहेवियर एंड कस्टमर बिहेवियर. आई गिव कश्मीर. यू वन एग्जांपल, राइट? कि एक फार्मेसी है एक छोटे से विलेज में, और उस फार्मेसी का ये डेटा होना कि जी उसके उनके पास किस किस्म की दवाइयां पड़ी हैं, किस क्वांटिटी में वो दवाइयां पड़ी हैं, और किस हिसाब से वो दवाइयां वो बेचते हैं ताकि उनका स्टॉक चंद अरसे बाद रिप्लेनिश हो. That is the kind, that is the level of richness of data that we have on retail pharmacies and retail merchants. अब उस काफी फार्मेसी इंटरेस्टिंग. का क्रेडिट असेसमेंट करना based on that data कदरे आसान है than doing it blindly, right? हम्म. So for us to be able to build a data analytics capability that utilizes data that our partners have, while protecting the privacy of that data, we want to ensure that we train our models uh, on scrubbed data and provide the right kind of working capital solutions, the right kind of credit solutions for retail merchants. That is one of the markets that we will be going into because we have that data. जहां पे इंडिविजुअल्स की बात आती है तो ये जो हमारे पास एक मैजिक डिवाइस है हमारे हाथों में, this जी. जी. emanates thousands of data points at any given point in time, and you ओके. can you can use some of that information with the right customer permission to be able to start to assess credit. अब दुनिया जहान में डिवाइस के डेटा के ऊपर बेस करके क्रेडिट कोरिलेशंस क्रिएट होना शुरू हो गए हैं, इसके ऊपर बहुत से पेपर्स भी आ गए हैं. सो भले हमारे पास पाकिस्तान में शायद उतना उतना ज्यादा डेप्थ में वो डेटा ना मौजूद हो और उतनी ज्यादा रिसर्च ना मौजूद हो, वी कैन ऑलवेज लेवरेज इट. वी कैन लुक एट similar markets. We can look at markets in Latin America, we can look at markets in Africa, we can look at markets in Southeast Asia, where data has been used to give credit to people who did not have access to credit. ओके. Uh, and we intend to do that as well. The stack that we have created in Singapore has the capability of doing that. We are also now bringing in local capabilities to help us analyze data in an effective manner so that we can link it to credit assessment and credit worthiness. But more ओके. importantly, not just credit, but to to be able to understand a customer in a more comprehensive way so that we can service them better. Okay. So from a business perspective, I would like to say digital banks are coming in. You are among the leadership uh, positions. जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं, डिजिटल ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल प्लेटफॉर्म है, वॉलेट्स एंड पेमेंट्स है, जब डिजिटल बैंकिंग आते हैं, आ जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ये वुड दैट बी कंपटीशन, और कोई एक इकोसिस्टम होगा अमंग द ऑलरेडी जो कि वर्किंग सोसाइटी है, और वो फिर कुछ अपना एक जिसे कहते हैं एक कंसोर्शियम या कार्टेल डेवलप होगा, और अदरवाइज, या ये एक Okay. अपना कंपटीशन टू कंपटीशन इसको किस तरीके से सर्व करें? सर देखें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज की एक कॉमन एनिमी है और एक कॉमन कंपटीशन है, और वो है कैश. ठीक है. ठीक है. हम हम सब का मकसद इस वक्त, चाहे वो कन्वेंशनल बैंक्स हैं, चाहे डिजिटल बैंक्स हैं, चाहे ईएमआईज हैं, चाहे कोई अनरेगुलेटेड फिनटेक्स हैं, चाहे कोई और फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेयर है, हमारी फाइट ऑन अ डेली बेसिस कैश के साथ है. ठीक कैश है. इज आवर नंबर वन एंड आवर सिंगुलर एनिमी. हम्म. पाकिस्तान में कंजम्पशन जो है वो तकरीबन $230 बिलियन की होती है. हम्म. ठीक है.
हर साल। ठीक है। उसमें से 98%, 98.2% ऑफ दैट कंजम्पशन इज इन कैश, राइट? ओके। आपकी बी टू बी इकोनॉमी जो है इज अनदर 100 बिलियन ऑन टॉप दैट। ठीक है। वो तकरीबन 70% कैश के लेन देन में होती है। ठीक है। और ये अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, वर्ल्ड बैंक की स्टेटिस्टिक्स देखें, या आप बाकी एंटिटीज की स्टेटिस्टिक्स देखें, आप समझेंगे, आपको पता चलेगा कि हम सिर्फ अपनी 1/3 ऑफ द इकोनॉमी को हम डॉक्यूमेंट कर पाए अभी तक। जी। बाकी 2/3 ऑफ बाकी इकोनॉमी तो सारी अनडॉक्यूमेंटेड है। अनडॉक्यूमेंटेड, बिल्कुल सही। आई एग्री। तो मेरे ख्याल में, मेरे मेरे जहन में, मेरा फाइनेंशियल सर्विसेज की दुनिया में किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। ओके। मेरा उससे कंपटीशन है जो कैश इस्तेमाल करता है, या कैश में लोन देता है, या कैश में पेमेंट्स वसूल करता है। बिकॉज एन इकोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन कैश हैज अ स्लोअर ग्रोथ रेट देन एन इकोनॉमी दैट इज डिजिटाइज्ड। ठीक है, ये कुछ इसके ऊपर ओके। स्टेटिस्टिक्स भी हैं। जब मैं मास्टर कार्ड के जमाने में था, तो हम्म। आई थिंक द बेंचमार्क वाज दैट फॉर एवरी एक्स बिलियन डॉलर्स ऑफ कैश दैट यू डिजिटाइज, you see a 1% growth in the GDP, ओके। right? And I'll get you that number. I forget what that number was, but that was a very useless mistake. ओके। ओके। Now, uh, now for us, it's जब आप बात करते हैं कि जी ऑनलाइन बैंकिंग की, Pakistan is such a huge opportunity when it comes to digitizing financial services कि हर डिजिटल बैंक, हर ईएमआई और हर बैंक अपनी जगह ढूंढ सकता है और अपनी एक नीश मार्केट बना सकता है, और अपने तरीके से उस कॉमन एनिमी का के साथ लड़ सकता है, उसको मैंने आइडेंटिफाई किया। आई डोंट सी दिस एज अ रेड ओशन, आई एक्चुअली सी दिस एज अ ब्लू ओशन। एंड आई सी कि हम अगर कोशिश करें तो हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू चेन को डिजिटाइज कर सकते हैं। अगर हम खाली डिजिटल बैंक एग्जांपल लें, तो ओके। 5 डिजिटल बैंक्स हैं, डिजिटल बैंक एस्पायरेंट्स हैं, इनको लाइसेंसेस मिले हैं। जी। एक डिजिटल बैंक एस्पायरेंट ऐसा है जिसके पास एक्सेस है टू लार्ज फर्टिलाइजर ग्रुप एंड अ हम्म। लार्ज एकेडमिक ग्रुप। एक डिजिटल अच्छा। बैंक ऐसा है जिसके पास एक्सेस है टू रिटेल मर्चेंट्स थ्रू देयर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर, विच इज अस। ठीक है। एक डिजिटल बैंक ऐसा है जो कि इस्लामिक प्रोडक्ट्स देना चाह रहा है एसएमईज को, ठीक राइट, है। जिसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में। बिल्कुल। एक डिजिटल बैंक ऐसा है जो कि पिछले 10 साल से एज अ ब्रांचलेस बैंकिंग एंटिटी काम कर रहा है, दैट इज इजी ठीक है। पैसा, इजी पैसा, ठीक है। राइट। और एक डिजिटल बैंक ऐसा है जो कि बाहर से आया है, जो कि यूएई से आया, जो में अपॉर्चुनिटी देखता है, जहां पे वो हम्म। ना सिर्फ एसएमईज और इंडिविजुअल्स के साथ काम कर सकते हैं। तो ओके। आप अ, आप ये देखिए कि खाली अगर ये 5 बैंक ही अपनी अपनी नीश पकड़ने की कोशिश करें, वो नीशेस ही इतनी बड़ी हैं पाकिस्तान में कि दोज जी। आर मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेसेस, राइट। बिल्कुल एग्री। आप अ, जब बुहीमत बैंक्स की बात करते हैं, लाइक एचबीएल, या हम्म। बुहीमत बैंक्स लाइक यूबीएल की बात करते हैं, दे हैव presence in different aspects of the economy, and they can digitize different aspects of the economy. When I was at HBL, I used to say that as HBL moves, so moves the Pakistani market. And HBL, when they start to digitize things, you will see that other entities would follow. Same is the case with other big banks. So, जैसा कि मैंने कहा कि I I see them all as my collaborators in a war against cash. ओके। And if we realize that, then we'll all be doing a great service for Pakistan by digitizing this informal economy that is held in cash. यानी great to hear your feedback about, but let's see how others would think on that area, on a lighter note। ठीक है, ये तो हम देख ही रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। सर, कमिंग बैक टू अगेन, मैं जो आपसे बात कर रहा था, आप मार्केट में लॉन्च अपने आप को सर्विसेज करते हैं। हु 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 वुड बी योर प्राइमरी टारगेट मार्केट, in terms of communication, in
इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग प्राइमरी अकाउंट्स जो कि फैसिलिटेट करें, प्राइमरी एक्टिव अकाउंट्स जो कि फैसिलिटेट करें उस पूरे बिजनेस प्रोसेस को, एंड देन आप फिर आगे ग्रेजुएट मूव करें। So, without giving too much away of our business strategy, जी जी I बिल्कुल will I जनरल। will yeah, I will share with you कि हमारा focus initially retail merchants पे होगा, because we have a strength there with our partner. We ओके। will have a focus on salaried individuals, on households, youth, women, freelancers. These are all pockets of opportunities that exist. Um, but we would like to start with our focal point, which will be the SME retail merchant. ओके, तो सर ये क्योंकि जो पाकिस्तान में अगर आप रिटेल मर्चेंट को देखते हैं, हाँ, हम्म, अगर आप रिटेल मर्चेंट को देखते हैं कामरान साहब, तो आप ये देखेंगे कि रिटेल मर्चेंट्स आर स्मॉल बैंक्स इन देयर ओन राइट. एक छोटा जी रिटेल मर्चेंट जो है वो 100 से 140 लोगों को महीने के महीने कर्जा देता है. जी बिल्कुल राइट. बिल्कुल। किस सूरत में कर्जा देता है? 14 साल की सूरत में कर्जा देता है. जी वो बिल्कुल। रिस्क खुद लेता है. दैट मर्चेंट इज टेकिंग दैट अंडर राइटिंग रिस्क ऑन देयर ओन बुक्स. हाँ राइट. बिल्कुल सही कह रहे जबकि उनको जरूरत कैश की होती है. उनको हैं। वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है नया सौदा साल खरीदने के लिए. जी। राइट. सो दिस मर्चेंट इज कॉन्स्टेंटली आउट ऑफ पॉकेट while they are paying their distributors in cash. हम्म, Right. जी और फिर अगर आप इन एन आइडियल वर्ल्ड, अगर आप उसी मर्चेंट को अपना एक एक्सटेंशन समझ लें बैंक की, तो उस मर्चेंट के जरिए आपको उनसे उन 100 से 140 लोगों तक रसाई हासिल है, जो उससे आके महीने के महीने कर्जा देते हैं. दे हैव जी फाइनेंशियल नीड्स. बिल्कुल राइट. बिल्कुल बिल्कुल। हमारी मोहल्ले की खवातीन उन मर्चेंट्स के पास जाती हैं रोजाना का सौदा सल्फ जी लेने के लिए. हमारे मोहल्ले के बच्चे उनके पास जाते हैं. हमारे मोहल्ले के कारोबारी लोग उनके पास जाते हैं. हमारे मोहल्ले के स्टूडेंट्स उनके पास जाते हैं. उनके पास तो पूरे मोहल्ले की एक्सेस है. और अगर आप छोटे मोहल्लों में जाएं, तो दुकानदार, जो छोटा मर्चेंट है, वो आ, उसकी उस कम्युनिटी में एक पोजीशन है. जी बिल्कुल। वो brings that community together at that ठीक है retail outlet. बिल्कुल जी। तो उस मर्चेंट के जरिए हमें बहुत सी छोटी मार्केट्स तक रसाई मिल सकती है, छोटी टारगेट मार्केट्स तक रसाई मिल जी बिल्कुल सकती सही, है. एंड आवर बिल्कुल आवर सही। जॉब इज टू empower that merchant to be able to for them to grow their business, and by growing their business, empowering the communities in which they work. हम्म, सर तो क्या आप क्या टाइम फ्रेम देखते हैं जहां व्हेन यू थिंक यू यू आर गुड टू गो एंड यू गुड टू लॉन्च इन द पाकिस्तानी मार्केट राइट नाउ? तो आई मस्ट अज्यूम कि जी आप अभी प्रिपरेशन और अपना फ्रेमिंग जो है वो बेहतर कर रहे होंगे, और अभी तो एक इनिशियल स्टेज पे है। सो हाउ लॉन्ग इट वुड टेक? तो देखिए, हमारा एक की स्टेक होल्डर जो है इज आर रेगुलेटर, इज द स्टेट बैंक. जी और जी। स्टेट बैंक ने जब डिजिटल बैंकिंग गाइडलाइंस निकाली, तो उन्होंने उसके साथ कुछ टाइमलाइंस भी आइडेंटिफाई की, जिसके ओके अंदर आपको वो प्रेपरेशन का टाइम देंगे, आपको पायलट करने का टाइम देंगे. पायलट के बाद आपको उनकी एक अपनी असेसमेंट होगी, और उस असेसमेंट के बाद वो आपको फुल लाइसेंस ग्रांट करेंगे. तो ओके उन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए हर डिजिटल बैंक की जर्नी कम से कम 1.5 से 2 साल की है, बिफोर दे आर रेडी फॉर अ कमर्शियल लॉन्च. ओके ओके। Right? A full commercial launch. We will be पायलट doing a फेजेस pilot. होंगे। We will be doing, जी yeah, we will be doing a series of pilots, inshallah, with the blessing of the central bank, once we are fully इंशाल्लाह incorporated. जी। और जब वो और हर स्टेज पे हम सेंट्रल बैंक की फर्दर गाइडेंस लेके अपने पायलट को बेहतर बनाते जाएंगे, और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव करते जाएंगे. सो आई थिंक फुल कमर्शियल लॉन्च में अभी भी 1.5 से 2 साल बाकी है, कम से कम. ओके ओके। एक क्वेश्चन था आपसे, अब ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट, इतना आप हैविली एक्सटेंसिवली बिजी हैं, ट्रेल की क्या कहानी है? ट्रेल स्टार्ट हुआ और वो आप, मैं देख रहा था प्रोफाइल में आपने एक ट्रेल का भी जो है कॉन्सेप्ट जो है स्टार्टअप की फैसिलिटेशन के हवाले से वो इंट्रोड्यूस किया हुआ है।
उसकी क्या प्रोग्रेस है, या वो अभी एक जो है वो पार्क है साइड पे, या वो एज वन नीड पे वो चीज एक्टिवेट होगी? Sure. No, trail uh, for a for a period of time was very close to my heart. It was something that I started purely as a boutique consulting practice. Uh, ओके। During my downtime, I had taken a career between Jazz Cash and Hugo. Trail is one was one of those things that came about because उस वक्त मुझे consulting के लिए बहुत से लोग approach कर रहे थे. ओके। ओके। So I started as a boutique consulting practice. Alhamdulillah, we in that period we grew significantly. We have ओके। active clients that are present in different parts of the world. I have stepped back from Trail because my focus is building the bank या uh, for Hugo. क्वाइट But ओके। I have had I've handed it over to a very dear friend of mine ओके। who has come in as a managing partner, and he is now helping us run the projects uh, जिसके लिए हमारी teams deployed हैं. Uh, he will continue to run that as a managing partner. I will not be involved in Trail for the time that I am involved with Hugo, and hopefully, uh, that will be for the next few years. उसके बाद, uh, once I feel that my work here at Hugo is done, तब we'll see what happens. I may go back to Trail, or I ओके। may just leave it in much more capable hands than mine, and I may go on to do something different at that point in time. Lekin abhi, my focus remains Hugo. That will be my अंडरस्टूड। sole focus till the time we have built this bank into a successful digital banking entity. Inshallah, you will. Inshallah, you've got a tremendous career track, and इंशाल्लाह आप जो काम कर रहे हैं वो जरूर कामयाब होगा, और इसमें कामयाब होना चाहिए, बिकॉज एज अ नेशन, एज अ प्रोग्रेसिव नेशन, आई मस्ट से हमें बहुत जरूरत है। 37%, अब 60% जो आपने कहा यूथ है, वो हमारी जो है 40 अंडर 35 है, तो कब तक हम जो अ, जो कन्वेंशनल चीजों पर रहेंगे? एक लास्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, आपका काफी टाइम लिया Yeah, मैंने। डू यू थिंक हम प्रोग्रेस कर रहे हैं डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर, फिनटेक के अंदर, या जस्ट हम एक रेल रन में हैं और चल रहे हैं? ठीक है, बिकॉज आई बीन सीइंग लॉट ऑफ न्यूज़ेस अराउंड, बट क्वाइट फ्रैंकली मैं पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा चैंपियन हूँ। मैं कहता हूँ कि जी पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए, बट ग्राउंड पे वो सारी चीजें दिखती नहीं है। ठीक है, कि वो चीजें कहीं कहीं फैसिलिटेट हो रही हैं। और एक एक डीमोटिंग फैक्टर ये है कि जहाँ इंटरनेट की हम आज तक स्पीड नहीं कंट्रोल कर पाए, वहां हम इतनी बड़ी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन की बात करते हैं। हाउ डू वी कोप अप विद द फर्स्ट वर्ल्ड? uh, देखिए, बहुत सी चीजें हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स बीइंग पेसिमिस्टिक, in the times about the times in which we live. Lekin, I would tell you this: Pakistan is a country with tremendous opportunity. Pakistan is a country of 220 million plus people, a growing middle class, a growing adult population, um, and we are we are the sort of people who take every adversity and we learn from it and we prevail. We come out stronger and smarter on the other side. एग्री। डिजिटल की दुनिया में मेरे ख्याल में एक बहुत पाकिस्तान ना सिर्फ बहुत बड़ा पोटेंशियल का हामिल है, वो इस पोटेंशियल को रियलाइज भी कर रहा है. We are amongst the fastest growing freelancer markets in the world. या Uh, हम दुनिया दुनिया को स्किल्ड और अनस्किल्ड टैलेंट पूल प्रोवाइड करते हैं. जी। यस, इंटरनेट के कुछ इश्यूज हैं. यस,
इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये तमाम चीजें they're part and parcel of being part of an emerging economy. अगर आप हम्म, इंडोनेशिया को देखिए in 2005 when it was going through its worst economic time, हम्म, तब से लेके अब तक इंडोनेशिया ने अपना जीडीपी तकरीबन 4x ग्रो किया है। हमारे से काफी। थोड़ी सी ज्यादा पॉपुलेशन है, हमारी जैसी ही पॉपुलेशन डेमोग्राफिक है। हम्म, अ, और उसमें एक बहुत बड़ा हाथ उनके प्राइवेट सेक्टर का भी था, जहां पे प्राइवेट सेक्टर ने डिस्पाइट ऑल ऑफ द चैलेंजेस दे कंटिन्यू टू कीप एट व्हाट दे वर डूइंग एंड दे फाइनली प्रिवेल। अब uh, अगर हम देखते हैं, अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, तो जब मैं पाकिस्तान आया था आज से 11 साल पहले, तब पाकिस्तान की फाइनेंशियली इंक्लूडेड पॉपुलेशन 13, 14, 15% के करीब थी। हम्म, हम्म, राइट, वी हैव ग्रोन दैट नंबर सिग्निफिकेंटली। हमारे नंबर ऑफ वॉलेट्स तकरीबन 90 मिलियन के करीब हमारे वॉलेट्स हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो मोबाइल वॉलेट्स हैं। ओके। uh, हमारे आप देखिए कि सादा पे, नया पे, फिंजा, ओ पे, जो हम्म, ये तो सादा पे, नया पे, फिंजा, पे प्रो एक्सेट्रा, ये वो फिनटेक्स हैं जो कि अभी बन रहे हैं और अभी जी, बने हैं पिछले चंद सालों में। जी, उसके अलावा आप देखिए कि जो अ, नए प्लेयर्स हैं वो कितने ज्यादा अब आते जा रहे हैं, बीएनपीएल के प्लेयर्स बिल्कुल, आ रहे हैं। अ, अभी तो हमारे मुल्क में क्रिप्टो जो है वो लीगलाइज नहीं है। देयर आर सो मेनी पीपल विद सो मेनी ग्रेट आइडियाज हु वांट टू डू डिफरेंट जी, थिंग्स। तो जी, बिल्कुल। टू आंसर योर क्वेश्चन, despite all of the challenges, we continue to be a country uh, that that is progressing towards realizing its true digital potential. It'll take us a little longer because of what's हम्म, going on, जी, because of all of the ability, could but we'll understand get that. there. Yeah. Inshallah, Uh, अगले we will अगले be पांच there से सात साल का with पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है मेरे जी, ख्याल में। with the leaders like you and your team and others. Inshallah, we will be progressing. But करंट जो फेज होता है उससे भी चैलेंजेस से निकलना और उसको अंडरस्टैंड करना, ये ये भी एक जिसे कहते हैं कुछ एक टफ तो नहीं, बट एक बहुत ही डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है जो कि हर किसी की बस की बात नहीं। बट ऑल्दो जिस तरह मैंने कहा, ऑलवेज बी मतलब आई ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन टर्म्स ऑफ माय कंट्री, माय पीपल, एंड दैट्स द रीजन स्टॉक पाकिस्तान इट सेज अराउंड के जी जो एक इनिशिएशन है कि जी पाकिस्तान लीडरशिप को और जो ट्रू टैलेंट है उसको थोड़ा सा डिजिटल वर्ल्ड पे जो है प्रोनाउंस किया जाए। बहुत शुक्रिया। आई मस्ट थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल दोज advices and discussion that we had. बहुत बहुत शुक्रिया। I really enjoyed it, and my apologies in the last for chasing you for quite a while, but Not at all. you must It's say that I am a I, good chaser. You must say that I am a no, good chaser. you have the I'll be entrepreneurial spirit, mashallah. You have the entrepreneurial Thank, spirit. thank you for your kind words. But I'll be more interested in your brand building and brand stories as a branding student or advertising student. I've been waiting for, and I've seen your uh, web appearance, the identity, the wealth save, and money pots and other. The concepts are awesome. But again, the mera point of view tha, we need to know that how you gonna take this thing forward in an understandable manner in terms of consumer education or customer Yeah. education, whether it's retail or whether it's a single customer. So, wish you sir best of luck. Thank you for your time, and inshallah जिंदगी रही तो आपसे फेस टू फेस तो ही मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम Kaman का। Saab, it's my pleasure. Thank you very much for having me, and we look forward to this interaction. And inshallah, with once our team is in place, we will come with some brilliant stuff that we'll share with you in the future, inshallah. इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। All right. Assalamu alaikum.